नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। पहले नुपुर शर्मा, अमरावती, उदयपुर, अब टी राजा सिंह। सर तन से जुदा का ये जो लाइन है, ये रुकने का नाम नहीं रह रहा है। आखिर इसको रोका कैसे जाए? इस पे फुल स्टॉप कैसे लगाया जाए? इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं तारिक फतेह सर। सर, आपका ऑल्टरनेट मीडिया पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी सर। ये रुकने वाली चीज तो नहीं है, क्योंकि जब आपके सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ योर पॉपुलेशन बिलीव्स इन इट, तो आप कैसे हटाएंगे? उनका ईमान ये है, उनका मजहब ये कहता है कि जहां मिले उनको काफिर को मार दो, तो वो तो किसी पे फिर इल्जाम लग सकता है ना। तो इसका एक ही सोल्यूशन होता है कि चर्च और स्टेट को सेपरेट करना, जैसे पूरे यूरोप में है, या एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन हो। लेकिन हिंदुस्तान में तो हमने देखा है कि वही सेक्युलरिज्म यूज होता है टू प्रमोट a certain very hostile attitude towards the concept of Mother India. So it's a very difficult question to answer. जब तक के मुसलमानों के अंदर नई लोग उठेंगे जो कहेंगे कि हमारे नाम पे ये आप तन से जुदा वगैरह तो ना करें, आपको ज्यादा शौक है तन से जुदा करने का तो अपना कटवा लीजिए सर, इसमें हम आपकी रोक टोक नहीं करेंगे। आप हैं होंगे गुनाहगार, हम तो नहीं है। और ये सर्वर काटने की डेथ पेनल्टी पूरी दुनिया अपोज कर रही है। आप यहाँ ना सिर्फ डेथ पेनल्टी बल्कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात कर रहे हैं कि डेथ पेनल्टी एक तो कोर्ट देती है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में अब भी है कि कई स्टेट्स के अंदर यू आर सेंटेंस टू डेथ बाय हैंगिंग और इलेक्ट्रिक्यूशन और पॉइजनिंग और जो भी 10,000 तरीके हैं लोगों को मारने के। बड़ी प्रिमिटिव सा कॉन्सेप्ट है। और सिविलाइज वर्ल्ड के अंदर आप देखेंगे कम मुल्क हैं, हमारे कनाडा में भी डेथ पेनल्टी नहीं है किसी चीज़ की। तो ये तो जो लोग ये नारा लगाते हैं, ये उनके पास चैलेंज है कि वो किस तरह इसको जस्टिफाई करते हैं कि रसूलुल्लाह पे जिसने गुस्ताखी की है उसको सर तन से जुदा, क्योंकि सर तन से जुदा तो ये गुस्ताखी के बगैर भी कर रहे थे। मतलब कोई दारा शिखों ने तो नहीं कोई गुस्ताखे रसूल किया था जो उसकी गर्दन काट दी औरंगजेब ने, या इमाम हुसैन ने भी नहीं किया था कुछ ऐसा अपने नाना के ऊपर, उनकी भी सरतन से जुदा किया था, मुसलमानों ने किया था। आई जगह ये तो इट्स अ प्रिमिटिव वे ऑफ एक्सप्रेसिंग पनिशमेंट। जो मौजूदा दौर का लीगलिस्टिक सिस्टम है वो करेक्शन सर्विसेज में आता है कि आप पनिश नहीं करते हैं, आप जस्टिस अकॉर्ड करते हैं। और अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा तो उसके अंदर ये फ्रीडम आपको देनी पड़ेगी कि लोग अपने तौर तरीकों से किसी पे क्रिटिसाइज करना चाहें, दे शुड हैव द राइट टू डू दैट। एंड इसीलिए I personally don't believe कि any religious figure should be above criticism. अगर किसी को यकीन है और अपने प्यारे नबी से उनका जोड़ है तो फिर उनकी जिंदगी को अडॉप्ट करें, तब मैं मानूंगा। ये तो नहीं हो सकता कि प्रॉफिट मोहम्मद एक बेवा से शादी करें लेकिन आपको चाहिए हो 13 साल 14 साल 15 साल की बच्ची, वो अपने से 15 साल की बड़ी उम्र से बेवा से शादी करें, आप कहें नहीं साहब हमको तो एकदम वर्जिनिटी टेस्ट कराने के बाद पता चलेगा कि ये कमारी है या नहीं है। So if we don't follow the prophet example in life, then we shouldn't be talking about के गुस्ताखी तो आप कर रहे हैं। The very simple thing, the
Prophet didn't feel angry when even he himself was cursed by his own tribe. कुरैश ने उनके साथ, मक्का की डोमिनेंट ट्राइब थी, बड़ा तंग किया उन्हें. He had to leave the city at one stage. 23 years is a very good book written by, I think, Ali Shariati की है, पढ़ने के लायक है. But it tells you how the Prophet endured these insults without expressing any anger. अब जिनको आप मानते हैं अपना लीडर, अपना गुरु, अपना खुदा का पैगंबर, जो अल्टीमेट सच का है, उन्हीं को फॉलो कर लें आप, तो बड़ी बात होगी. ये तो कहीं इस्लामिक तारीख में रसूलुल्लाह के ज़माने में है ही नहीं कि जो गुस्ताख रसूल. एक कहानी मैंने भी सुनी थी while I was with an ex, मैं किसी एक्स मुस्लिम के साथ एक कर रही थी कि उनके ऊपर कोई महिला थी जो उनके ऊपर रोज कूड़ा डालती थी, जानबूझकर डालती थी. वो ठीक है, वो स्टोरीज हैं, फाइन. There's no point in repeating those stories. The point is very simple. There is no provision in any of the Prophet saying कि मुझे अगर कोई इंसल्ट करता है तो उसकी गर्दन काट दो. There is no directions in the Quran that suggest that if somebody insults the Prophet, you're duty bound to slaughter that person, behead him. ये तो जहालत की दास्तान है ना. जिनको समझ ना आए, जिनसे कुछ बहस ना हो पाए, जो बहस में नहीं जीत सकते, वो फिर आगे से ये रिएक्शन होता कि तू होता कौन है ये बात करने वाला, मैं तो तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा. वही है ना, सड़क की ट्रैफिक एक्सीडेंट वाली टाइप की लड़ाई है ना. तू आगे तुमने ये किया, राइट टर्न लेनी थी, है वो, अरे नीचे उतर, तू बाहर निकल, तेरे देख लूंगा. गुंडागर्दी का कल्चर है जिसके अंदर फंसे हुए मुसलमान. आप भी देखो. यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, जो स्पेशली जो एजुकेटेड मुस्लिम्स भी हैं, वो ये कहते हैं कि अगर एजुकेशन मिल जाए, ये लोग डेवलप हो जाएं, ये लोग इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाएं, तो इस टाइप की जो इनकी मेंटालिटी है वो चेंज हो जाएगी. नहीं, मैंने तो जितने एजुकेटेड देखे हैं वो दे आर मोर रेडिकल. आपके जो इख्वानुल मुस्लिमीन है, मुस्लिम ब्रदरहुड है, उसमें हैं, आप देख लीजिए, डॉक्टर्स एंड अकाउंटेंट्स एंड इंजीनियर्स. आप वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में आके देख लीजिए, जो मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये जमीयत तलबा, ये सारे, ये ऑल एजुकेटेड. आप किसी गांव में चले जाइए, किसी मुसलमान देहाती से बात करिए, उसको हेट्रेड का कंसेप्ट नहीं है उसके यहाँ. आपने कभी देहाती किसी को देखा है किसी ने सोमालिया के देहात से निकलते हुए जाके सरतन से जुदा कर दिया? ये तो शहरी बाबू का नारा है ना. और जिसके पास कुछ फन्ने खानी दिखाने की होती है, कह रहे हम तो ऐसे हैं, आप जानते नहीं हम कौन है, वही कर रहे हैं ना. द मोर एजुकेटेड यू गेट, द मोर रैबिट यू गेट. अगर इसका इलाज होता है तो एजुकेटेड नॉर्थ अमेरिका में जो मुसलमान है, क्या वो नहीं समझते कि दे शुड बी ऑन द साइड ऑफ सलमान रुश्दी, नॉट द अटैकर? बट आपने तो देख लिया, जिनके पास इंटरनेट है, जिनके पास एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो तो सलमान रुश्दी के पे अटेम्प्टेड मर्डर होने की खुशियां मना रहे थे पाकिस्तान और इंडिया में. दे वेरी हैप्पी. तो एजुकेशन इज नो पैनासिया फॉर, एजुकेशन इज टू गेट जॉब्स. किताब भी जो हम पढ़ते हैं वो होता है कि फलाने एग्जाम की तैयारी करनी है, ये करो, एलसैट में देना है, जीमैट पढ़ना है, वीजे के लिए पढ़ना है, ये सब है. ESL की पढ़ाई कर रहे हैं. So there is no evidence to prove that. In fact, the less literate you are, the more sensible you are as a matter of practice. जो बद्दू है सऊदी अरेबिया के डेजर्ट का, वो he is not the radical. Radical is the guy who is in the city. And जिसको religious police कहा जाता है, मुतव्वे जो होते हैं. इसी तरह आप देखिए, जो AIMM में लोग हैं, ये एजुकेटेड लोग हैं ना. और तो आपको I was coming to actually that. जी, I was actually coming to that, sir. मैं आपको एक बहुत funny सा वीडियो दिखाऊंगी. Just, he is an educated man, stays in Hyderabad.
You have heard of the T. Raja Singh controversy. Now Yes, see of what he course. has done. जी के कमिश्नर, यहाँ का होम मिनिस्टर तुझ जैसे हरामी बद जानवर पर एक्शन नहीं लिए आज, तो हम भी देखना क्या करेंगे। और ये वीडियो then he says कि मैं ये वाला काम कर दूंगा, but हाँ, then after 2 hours when the police takes good care of him, इमरान, तू रुक, कहाँ जा रहा तू? तू आया काहे को इधर? तू आया काहे को तू इधर? मस्ती है तेरे को? हाँ सर, मैं पुलिस वालों से बात कर रहा हूँ। आया काहे को रहा इधर? he is an educated youth and let me tell you sir, सिर्फ यही नहीं है, ऐसी ऐसी अभी during the course of the talk I'll show you there's a woman who is running a good shop and she is saying कि मैं तेरा सर कर दूंगी for ये T. Raja आपने Singh. सवाल आपने पूछा था ना, पढ़ एजुकेशन मिल जाए तो ठीक हो जाएंगे। ये देखिए, जो लोग जादूगरी में मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा कम है ना, मैं इसलिए आपसे जानना चाह रही थी। तो आप जरा कुछ अनपढ़ लोगों के साथ उठा बैठा करें। ये ज्यादा पढ़ लिख गए तो मारे जाएंगे, वरना क्या बताएं आपको। इट इज ओनली द एजुकेटेड who exploit the poor. It is only the educated who enforce the caste divisions in India. It's only the educated who look at contempt with people who have not had the privilege of getting education. तो ये तो आपके कैपिटलिज्म की एक खासियत है, उसके अंदर आप बीच में ये जो मुसलमानों की सुप्रीमेसिस्ट आइडियोलॉजी वो मिला दीजिए तो क्या कहने। वो तो समझते हैं कि they are the only religion on earth and everybody else is a kafir and therefore has to die. So अभी तक आप लोगों को ये सबक नहीं समझ में आया तो मैं क्या करूं। हाँ, ये क्या कह रही हैं? टांग डाल के चीर दूंगी तेरे घर के समेत, तेरी जबान यहाँ से निकाल दूंगी। अगर पार्ट 2 निकालने का सोचना नहीं, जो अब निकाल के बहुत बड़ी गलती कर दिया, हमारा दिमाग खराब कर दिया। तू दिखेगा तो Sir, she is तेरे घर वाले खुद नहीं पहचानेंगे तुझे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आयशा परे आज हैदराबाद में रात से जो माहौल खराब है, एक राजा सिंह जी सॉरी, आई मीन शी इज वेरी लाउड कि मेरा फोन भी उसको बंद नहीं कर रहा है। I wanted it to shut down. गलत बात करी। But yes, the fact is she's an educated woman. She's running a Because good shop in Hyderabad. there is no correlation between the two. The uneducated at least knows that he doesn't know everything. The educated Islamist, and I distinguish between Muslim and Islamist, the educated Islamist is confident that he or she is on the right path and that all kafirs have to die before real life will start. असली जिंदगी तो मौत के बाद शुरू होती है ना। तो आप लोग तो ईसाई होके वापस आ जाते हैं, हमारे वन वे टिकट है, हम बस एक ही दफा जाते हैं और फिर जिंदा ही रहते हैं हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में। तो अब क्या किया जाए। वो 72 हो रहे हैं वहाँ पे, बड़ी अच्छी है, मैंने उनकी बड़ी डिस्क्रिप्शन अच्छी सुनी हुई है। हाँ, तो वो यहाँ तो नसीब नहीं होती, शक्लें खराब हैं तो वो गर्लफ्रेंड तक नहीं बनती, दूर क्या बनेगी। तो वो उसकी तमन्ना में बैठे हुए लोग, मार दें, कट जाएं, मर जाएं। बट दिस इज द ट्रेजेडी। क्या इन लोगों को इन्हीं की लैंग्वेज में समझा कर रोका जा सकता है? क्योंकि आई थिंक दे अंडरस्टैंड, जैसे अभी जो मैंने पहला वीडियो दिखाया था, दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ पावर। मतलब इनको जब डंडे के उस पे रखे जाते हैं तब ये थोड़ा संभल कर चलते हैं। क्या इनको उस तरीके से रोका जा सकता है? I don't think this is a challenge to primarily to India's Muslims. It is their duty to clean up their house. ये आपका गटर कोई और आके साफ नहीं करता। आपके घर में सफाइयां करने के लिए आप पड़ोसी को नहीं बुलाते हैं कि यार जरा वैक्यूम कर देना, मेरा मूड नहीं हो रहा। You have to clear the dirt. And जब तक कि मुसलमान हिंदुस्तान के तो समझदार हैं, जो अपने आप को हिंदुस्तानी पहले समझते हैं, इनकी जिम्मेदारी है ना कि पहले ही अपनी कोई अंजुमन बनाएं, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, and then they challenge these people rather than sit and sip on beer and whiskey and proclaim themselves to be atheists and then do what? Nothing. आपने खुद ही कह दिया कि आप मुसलमान नहीं हैं, तो फिर खत्म हो गई ना बात। तो ये तो चलता रहेगा।
आज से चल रहा है। हिंदुस्तान के बाजू नहीं काट दिए, उसमें भी ठंड नहीं पड़ी तो एजुकेशन मिनिस्टर सारे मुसलमान बना दिए। ये कोरोना थोड़ी है। जी। तो सर आपको लगता है ये जो एक्स मुस्लिम वाला जो चल रहा है मूवमेंट, वो अभी खैर नॉट ओनली इन इंडिया, वो अक्रॉस द वर्ल्ड चल रहा है, वो उसमें है दम? क्या वो क्या इसको कुछ कर पाएगा कटेल? क्या करेगा? वो पहले ही टीम से बाहर है, तो क्या करेगा? टीम ठीक करेगा? वो कह रहे हैं कि मुसलमान पे लानत हो, खत्म होगी बात। जा भाई, अपना क्लब बनाओ, खेलो, कुछ दारू वारू पियो, वही अट्रैक्शन है ना। स्टाइल हो कुछ, हम एक्स हो गए जनाब, हम यानी और मौलवी और मौलाना कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि उनका कोई फायदा नहीं है उसमें करने में, अगर वो नहीं, थोड़े वो से तो संभल एक जाएंगे। क्लॉज है। एक्स मुस्लिम तो वो है अपनी जिम्मेदारी से भाग जाना। तो कहते हैं अपने को पता ही नहीं, हम तो इस्लाम की क्रिटिसिज्म करेंगे और बाकी लोगों को भी एक्स मुस्लिम बनाएंगे। तो बना लो भैया, 2 बिलियन लोग हैं, करते रहना। कोई 4-5 हज़ार साल लगेंगे तुम्हें कन्वर्ट करने में, बजाय इसके कि टू एंगेज पीपल विद सम करेज इन योर हार्ट and expose the truth as against the irrationality of magic and lies. You are succumbing to exactly what they want, the mullah wants you to do. Every time कोई एक्स मुस्लिम गाली देता है इस्लाम को, मौलवी उतना तगड़ा हो जाता है। वो तो घर पे नहीं कहेगा देखो क्या कह रहे हैं, इस्लाम खतरे में, हमारे नौजवानों से एक्स मुस्लिम बना दिया इनको। क्या एक्स मुस्लिम है भाई? तुम बोलो यू आर एन एथियस्ट सोसाइटी। ह्यूमनिस्ट सोसाइटीज हैं जहाँ एथियस्ट अपने आप को मिलते हैं, जहाँ क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू, काला गोरा नीला पीला सब हैं। यहाँ टोरंटो में ह्यूमनिस्ट सोसाइटी। सो ऐसी कोई 30 मार खान वाली बात तो नहीं है। बट आप देखिए कि इवन एन अपोसेंट्रिक होना जरूरी है कि हम एक्स मुस्लिम हैं। बताओ, कर लो भाई जो करना है तुमने एक्स मुस्लिम होके। एंड में तो सलमान रुश्दी को गले में चाकू पड़ेगा ना। उसने तो नहीं डिक्लेयर किया ना वो एक्स मुस्लिम है या मुस्लिम है, क्या भी, वो अपनी काम से काम रख रहा। आप बताइए, हाउ हैव यू कंट्रीब्यूटेड टू दैट? हैव यू रेज्ड द इशू? हैव यू डन समथिंग टू डिफेंड हिम? मेरा तो फेसबुक का पेज बैन हो गया एंड आई एम ऑफ इट simply because I was promoting his cause and talking about Salman Rushdie and the butchery that was done. So the Facebook on which I was connected with you, Yes, that one? it's finished. There, I had 350,000 followers and about 5,000 members. I've been prohibited from, and no way of getting. I've had a tremendous loss of pictures, everything. I couldn't even imagine कि इस टाइप का होता, but this is a aspect of monopoly capitalism. उनके पास है सारी मेरी प्रॉपर्टी, फोटोग्राफर्स की, आर्टिकल्स, ये वो, everything is gone. There is not even an email address that I can write to or a phone number, nothing. And मैं अगर नहीं भूला हूँ तो इनकी जो मॉनिटरिंग भी जो है वो कुछ हमारे ही दोस्त लोग करते हैं, और वो उसका ऑफिस था इंडिया में। फेसबुक एक जमाने की बात कर रहा हूँ। तो those are the prices you have to pay if you are, taking on this battle. And इस वक्त सबके सामने है। तन सर से जुदा तो सलमान रुश्दी की करने की कोशिश की ना, वो भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, where he was going to deliver a lecture. I mean, writers बड़ी who fled जी। other countries to take refuge in America. They were actually telling कि no matter where you go, we are right there. Yes. हाँ, मेरा इंटरव्यू भी आप संभाल के कहीं रख लीजिए, कहीं चला जाएगा। ऐसे मत बोलिए प्लीज 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 प्लीज। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लीज डोंट टॉक। बट यस, मैं अभी अपने सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, स्पेशली अगर कोई जिनके लगता है कि पिक्चर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स है फेसबुक में, बिकॉज मेरे भी हैं जो शायद मैंने अपने टाइमलाइन से हाइड करके रखे हुए, बट इट इज देयर।
प्लीज मेक अ कॉपी, क्योंकि सर की बात सुन के तो मुझे भी शौक लग रहा है कि इवन आई हैव सर्टेन पिक्चर्स व्हिच आर जस्ट ओनली मेंट फॉर मी. आई मीन इट्स लाइक मतलब स्टोर एवरीथिंग टाइप. इज गॉन. आप समझो almost 15 years of everything that I had. Because for me it was a work area where would connect with friends and family and share my thoughts. उनको कुछ बहुत बुरा लगा कि ये तो यानी जिहादियों के अगेंस्ट बोल रहा है. आप सोचिए कहाँ कहाँ बैठे हुए हमारे दोस्त. कहाँ बैठे हुए. यू राइट. दैट इज व्हाट एक्चुअली ट्रबल्स. और इनमें से कौन होगा, यही प्रॉब्लम है कि आपके बगल में आप हाउ वुड यू डिफरेंशिएट कि जो बंदा आपके बगल में है, जो जालीदार टोपी पहनने वाला बंदा है, वो अच्छा है या खराब है. हाउ वुड यू डिफरेंशिएट, क्योंकि ये बोलते तो है नहीं, सामने तो आते हैं नहीं. मेरी जो लोकल पुलिस डिवीजन है जहां मैं जाके कंप्लेन करूं कि जैसे एक दफा किसी ने मुझे एक टैक्सी ड्राइवर ने थ्रेटन किया था, आई हैव अ पिस्टल फॉर यू. तो मैं स्टेशन जाके आई leveled the complaint. There was a photograph of the driver, his taxi, his number plate, everything. So then two officers came to meet me, and then later a Pakistani appeared who was their boss and asked them to go home. And the chief of the police in where I live, not the word chief, but the head of that was a Pakistani. Once about 10 years ago, I was in a hospital where I was threatened. And when the police were called, two officers came. And वो बात मुझसे कर ही रहे थे कि एक और पाकिस्तानी आदमी आया, उसने कहा कि मैं इंटेलिजेंस से हूँ, पुलिस इंटेलिजेंस से. And he asked those officers go. Then he said, और बताइए क्या कंप्लेंट है. मैंने कहा कोई कंप्लेंट नहीं सर. सर तन से जुदा आप हैं, आप हर जगह बैठे हुए हैं, हमें पता है. From India's president's office right down to this hospital's orderly, आप प्रेजेंस है, आपका काम है सर तन से जुदा. बस आप जाइए. मुझे the police complaint was taken off. The officers were told not to address this, and in fact the woman who had threatened me was told that if she wanted, she could file a complaint against me for harassing her. छोड़ें, सबका टाइम लिखा हुआ है. जब जाना होगा चले जाएंगे. लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी इन्फिल्ट्रेशन है. आप इंडिया की बात कर रहे हैं या व्हाइट हाउस के अंदर बैठे हुए लोग. दिस इज वेरी टेरिबल सिचुएशन. और ये सिर्फ यहीं पर नहीं है सर, सारी कंट्रीज में. इनफैक्ट देयर वाज अ वीडियो फ्रॉम डेनमार्क टुडे आई सॉ ऑन वन ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वेयर आई एम श्योर यू हैव आल्सो सीन दैट कि यस, वो गालियां दे रहा है उनको कि यू कैन नॉट प्रोड्यूस चिल्ड्रन, वी मुस्लिम्स विल क्रिएट द नेक्स्ट पॉपुलेशन. वाहियात किस्म की गुफ्तगू. You go to Netherlands, you will find the same thing. In Moroccans और ये आपके पाकिस्तानी और सब मिलके पूरे गेटोज बनाए हुए हैं. फ्रांस में आप देख लीजिए, इटली में. प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, पर इसका सोल्यूशन क्या होगा? दैट इज व्हाट समटाइम्स स्ट्राइक्स मी. हाउ वुड दे स्टॉप? Well, How can they be stopped? We'll have to keep on fighting and stand up against them. कितने मारेंगे? एंड इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी हिंदुस्तान के मुसलमानों पे है, क्योंकि वो तो फेयर नंबर में हैं एंड दे कैन फॉर्म लिबरल प्लेटफॉर्म जिसके अंदर दे कुड चैलेंज दिस. बट प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे जो इनलाइटेंड या लिबरल या सेक्युलर मुसलमान हैं वो अपने आप को किसी और लेवल का समझते हैं. वो आपके यहाँ वो आ जाता है ना कि इसकी औकात क्या है, यार छोड़ो इन घटिया लोगों से क्या बात करनी. यू हियर दैट क्वाइट ऑफन. तो वो उसके अंदर चले जाते हैं. पीपल ट्राई एंड इग्नोर इनसे कि ठीक है दूर ही रहे तो अच्छा. इट्स यू नो लाइक कीचड़ में पत्थर मारना. इट्स समथिंग लाइक दैट, सो पीपल कैन बी अवॉइड. बस जय हिंद करते रहिए आप, कीचड़ पे पत्थर मारते रहिए आप.
800 साल हो गए आप पे कब्जा किए हुए, आपको तबाह करने के लिए। पूरा सिंध जो है, आप बताइए, जो हिंद होना चाहिए वहां हिंदू भी नहीं बचा कोई। मुंजिदारो खत्म हो गया, तक्षशिला, नालंदा, देते जाइए आप। वो आपके कारोबारी लोग कहते रहेंगे इसमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, इसमें कुछ व्यापार करना चाहिए, करो व्यापार। दिन खा के वो थूक देंगे ना, हड्डियां बाहर निकाल के, तब होश में आएगा। कश्मीर से तो निकाल दिए ना सारे पंडितों को फिर। जी, right, sir, right. So, I know it's a very, what do you If say, I'm difficult sounding, topic, and if I'm sounding dejected, the reason because I am dejected today. I find absolutely very little hope that anything can be done short of a catastrophe, which millions will die because these guys now have a nuclear bomb with them. You know, everything is the fault of the Jew and the Hindu and the West. And every Muslim is convinced about that. There is very little recognition that we are doing something wrong. Absolutely not. it's going to be a very bloody fight whenever it comes to last, if they are not changed. I think Then Mohammed bin Salman is trying to change, but मुझे लगता नहीं है कि it will be so soon that he'll be able to stop anything of that level. let's hope not. It's not going to happen from the subcontinent's Muslim. At least Mohammed bin Salman knows he's an Arab, and Erdogan knows he's a Turk, and Khomeini knows he's an Iranian. आपके इंडिया पाकिस्तान के मुसलमान तो ये भी नहीं एक्सेप्ट करता कि वो इंडियन है, तो नाम के आगे लगाता है सैयद और जैदी और कुरैशी और हाशमी। वो ओपनली कहता है मैं इंडियन नहीं हूँ, नाम ठप्पा लगा के। So मेरे को ना, I don't know why I have lot of hopes कि things will change. I'll tell you maybe 2-3 liners only. I spoke to one of my friends and she's a big spiritual person. She's based in Australia, and I was telling her, yeah, I mean, we are talking of ahead, we are talking of future. She said, Gayatri, things will change. Hope sustains life. It will change. Don't worry. And they will change. The change will come from within them, because outsiders will not be able to change them as much as they will change from, as the change is needed from inside, and it will come. It can only come in India, and I don't think the Indian state or the establishment or the government or have even recognized that they are duty bound to do something about it. There's nothing. आप कतर की ब्लैकमेलिंग पे नूपुर शर्मा को सैक्रिफाइस कर देंगे, शर्म की बात है ना ये। Same thing happened with T. Raja Singh, more or less. खैर टी राजा सिंह के तो कुछ इंटेंशनली वो था, वो जो भी हो, लेकिन once you've set the pattern with Nupur Sharma, who said exactly what Muslims say, and you apologized and fired her and set her up for a life of threats, सारी जिंदगी वो डरेगी ना, और कब मार देगा, कौन सा लबनानी आके मार देगा, ये भी नहीं आपको पता ना। और वो जो मोहल्ले वाले हैं वो तो नारा लगा रहे हैं सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। Zombies to a great extent. Thank you so much, sir, for joining. And I understand difficult situations and difficult answers, but I don't know why. I'm very hopeful. With time, things will change and they will improve. आपके मुंह में घी शक्कर। Thank you so much. Sir, I don't know why. I'm very hopeful. Maybe, I don't know how to articulate that, but I'm very hopeful. Things will change. The positive signs are there. A lot of positive signs are there. Thank you. Jai Hind, Jai Shri Ram. Don't forget to donate, as Tarek Fatah said, कि भाई मांगने में शर्माना मत, तो मैं मांगने में शर्मा रही हूँ, प्लीज हेल्प। पैसा निकालो, सामने रखो। जी। ठीक है। नहीं, मेरे लिए सर इतना भी बहुत सपोर्ट होता है कि अगर वो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, लोगों को पता चले कि जो हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। You're doing a great job because very few people are doing this job. God bless you. चलें। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर।